So yeah, give me your experience here. How was your GD in the interviews? What are the topics? Do you remember? Mainly they asked about the theories of HR because I was into HR domains. GD का topic है theories of Yes, HR. yes. How to prepare for group discussions? अगर मुझे जैसे आपने बोला कि हमको कोई टॉपिक पता नहीं है तो सुनो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं और उसमें से अगर जो समझ आ रहे हैं वो बोलो और अगर तुमको आता है टॉपिक तो तुम भी बोलो बाकी लोग को भी बोलने दो। विद इन 1 मिनट और 2 हमें वाइब पता चल जाती है कि हमारे सामने जो पैनल बैठा है वो है कैसा, तो हमें उनके अकॉर्डिंगली साइकोलॉजिकली भी हम खेल सकते हैं। Alright, hi everyone. GDPI की तैयारी कैसे करनी चाहिए बिजनेस स्कूल क्रैक करने के लिए? अगर आप किसी टीयर 2 या टीयर 3 बिजनेस स्कूल के अंदर जा रहे हो, वहां पे क्या होता है इंटरव्यू के अंदर, वो आज बात करेंगे। इनफैक्ट अगर ग्रुप डिस्कशन के अंदर चुप रह के भी क्या आप कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं? वी गोना हैक ऑल दीस थिंग्स फॉर श्योर। टुडे आई एम हियर विद ABBS एंड स्टूडेंट्स एंड देयर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एज वेल एंड सेकंड ईयर। इसके अंदर 2 लोगों का टोयोटा में नौकरी लग चुकी है और एक का तो टोयोटा में पीपीओ भी आ चुका है। हाय एवरीवन, वेलकम गाइस, वेलकम। क्या हाल चाल है? All good? Great, yeah, great. Good seeing you. Great. A quick your name and are you in first year, second year? That could be great. And where are you from? फटाफट your name, where are you from? And first year, second year. हाँ बताइए। My name is Reenal. मैं फर्स्ट ईयर में हूँ PGDM और आई एम फ्रॉम हैदराबाद। Oh, lovely. How about माय you? नेम इज कुहेली, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ एंड आई एम फ्रॉम कलकत्ता वेस्ट बंगाल। Excellent, great. I'm Suhas. I'm in second year. I'm from Davangere. From? Davangere. Davangere. Karnataka. Okay. Hi, myself Minshu. I'm from Kurk. Coorg is in कर्नाटका। कर्नाटका बोलो यार, उनको समझेगा नहीं Coorg किधर है, दावनगिरी किधर है। Karnataka. ये फिर हैदराबाद समझेगी हैदराबाद क्यों नहीं समझेगा? तो दावनगेरे भी समझ में आना चाहिए। क्यों भाई? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। इट इज मैनचेस्टर ऑफ कर्नाटका। मैनचेस्टर, ये इनकी दिस इज where we grow more highest cotton ये and maize. कर्नाटका। देखो मेरे आधा मेरे बॉडी में कर्ड राइस है बिकॉज आई हैव स्टेड एंड ग्रू अप इन कर्नाटका। बट ये लोग कुछ भी करते हैं। क्या कूर्ग को क्या बोलते हो? स्विट्जरलैंड ऑफ Scotland of India. स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु हैवंट बीन टू स्कॉटलैंड, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए थी एक बार स्कॉटलैंड जाके और फिर कंपैरिजन बंद हो। स्कॉटलैंड बिल्कुल नहीं है बट हाँ मैनचेस्टर ऑफ कर्नाटका। मैनचेस्टर क्यों बोल रहे हैं? मतलब आई वाज इन मैनचेस्टर 6 months बैक। व्हाई? It is in center part of Karnataka. It grows highest cotton and maize supplies through Karnataka and different states Okay. around. Yeah. Okay, I thought you were going to say football team अच्छा है because Man City, Man United. I was thought, but ठीक है. Nevertheless, let's get to action यार. How was your interview when you were giving the interview और क्या-क्या tips हैं? और ये दोनों तुम्हारे टोयोटा में लगी है ना? तूने समर इंटर्नशिप किया है, इसका PPU भी आया। उसकी भी थोड़ी बात बताना। GD हुआ था? Did you have group discussion? Yeah, we had a group discussions. Actually, it was mainly with a different part of people from Karnataka. It was, and I met people, and getting into JD was like it was my first interview. Never before I have attended interviews, but then that was my first experience. And getting there, I took a first chance because first chance will also be advantage and also be disadvantage. But for me, it was an advantage. The questions what they asked and the answering, it all went so smoothly and it was not that boring. Because even JD What are the topics? Do you remember? topics mainly they asked about the theories of HR because I was into HR domains. GD का topic है theories of HR. Yes. Whoa, We started with the theories. अच्छा, by the way, ऐसे topic आ सकते हैं and you could be getting stuck. We don't know anything. हाँ, theories of HR याद ही नहीं हो कुछ हमें। तो हुआ ही नहीं है। वो हम मीम तो डाल फर्स्ट सकते ईयर हैं। के हैं। Few minutes later हुआ था ना मीम के अंदर। हाँ भी theories of HR। 2000 I'm into years operations later. and analytics. तो ऐसा तुम GD में थोड़ी बोलोगे आई एम इनटू ऑफर। So your GD topic could be anything. अच्छा, by the way, ये तो चलो very specific हो गया। There sometimes you're not prepared about sports or IPL, boon or a bane. If you're a girl, you may not follow. I'm just generalizing it, yeah? है ना? You may not follow IPL, right? तो तुम उड़ जाओगे बैठ के। और the new age sports coming in India. IPL तो है, but कबड्डी का भी PL शुरू हो चुके हैं, right? There's a Kabaddi Premier League also which When is we coming have up. WPL. WPL as well, yeah. There's a lot of women का हो रहा है, captain कौन है? If you don't know any topic, there's a hack. If you don't know, and the hack is that you can listen in the GD for some time and take some input from people who know about theory of HR. That's what I did. That's what you did. Yeah. Wow. And then you can use the same topics Yes. and pull it back. At Yeah. the end. या क्या ये नकली है? नकली तो है। दूसरा ऑप्शन है चुप करके बैठे रहो, वैसे रिजेक्ट हो रहे हो तुम। उससे अच्छा अपने कम्युनिकेशन स्किल तो बता दो। यू गाइस कैन लर्न इट अप। दैट्स लवली, ग्रेट यार। So yeah, give me your experience here. How was your GD in the interviews? What are the topics? Do you remember? Yeah, there was no GD basically because it was summer internship, Okay. and the topics they discussed with me was into some
purchase, like regarding the supply chain statistics. You were in operations. तो Yes. PI. We'll come to PI. Do you remember your GD topic क्या था? क्या topic चलते हैं आजकल? मेरा जीडी कुछ एकदम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट इट वाज वेरी कॉमन, मतलब जो मैं खुद से बना के बोल सकता हूँ. आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड. सडनली था मेरा जीडी, आई गॉट अ कॉल कि ऐसे आ जाओ. ये सब लास्ट मिनट की होता है अच्छे बीच स्कूल्स के अंदर. लास्ट मिनट में आपको बुलाया जा सकता है. तो जीडी टॉपिक्स कर लो यार, थोड़ा बजट पढ़ लेना चाहिए फॉर श्योर. राइट, अभी स्पोर्ट्स आईपीएल शुरू हो जाएगा तो करंट अफेयर यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग विद डोनाल्ड ट्रम्प. यू शुड बी नोइंग डोनाल्ड ट्रम्प Even with the stats. even with the statistics. very very important. सेंसेक्स ऊपर नीचे क्या चल रहा है. यस, डू यू हैव एनी जीडी देयर? फिलहाल मेरा तो कोई जॉब इंटरव्यू लगा नहीं था अभी तो अभी first year तक. में है, हाँ, अभी अभी फर्स्ट final ईयर है. में हूँ. जी बहुत ही क्रेजी है. बहुत great, congratulations for that. Yeah, थैंक यू सो मच that's सर. lovely, that's lovely. जी, मैंने वहाँ पे भी Basically, they even give some concept like a keyboard they had given, and also one of the pen they had given, and also they asked how are you going to market it. Even though I'm from HR background, they asked in common what can you do from that. So they're just taking out your ideology, how you can be creative enough and quick enough to answer when they ask the question. On the spot topic Yeah, देके on the you got spot- it right. on the Great. spot topic. How to deal with GDs यार? तुमने पढ़ाई तो कर ही ली है. While preparing for this college, did you have GDs before? Yeah, you had GDs. How to prepare for group discussions? पहला चीज़ जीडी में मुझे जो लगता है कि अगर मुझे, जैसे आपने बोला कि हमको कोई टॉपिक पता नहीं है, तो सुनो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं और उसमें से अगर जो समझ आ रहा है वो बोलो. और अगर तुमको आता है टॉपिक तो तुम भी बोलो, बाकी लोग को भी बोलने दो. Correct. खुद बोलने लगोगे तो या You have to make sure that you give chances to other Chances to people as well. everyone. Great. राइट, वही सेकंड टिप, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि भाई तुम अगर बोलना बंद करोगे तो तुम्हारा कोई सुनेगा ना. Correct. Don't overdo it. Even if you have all the हाँ, possible points. वही, Great. वही. You should be knowing what to speak with the relevant topics what they are speaking, and it should make sense that the people are understanding what you are saying. Yeah, talk relevant. Don't bullshit. bullshit, yeah. That's a good one. When the opportunity we have to seek opportunity is more important. So Yeah. knowing that is also an Try to get important into point. GD as much as possible. Don't overdo it as well, right? Overdo it नहीं करना. Sometimes it may go in fish market. Yeah, sorry, you were saying. वाइब भी पता चल जाती है. विद इन 1 मिनट और 2 हमें वाइब पता चल जाती है कि हमारे सामने जो पैनल बैठा है वो है कैसा. तो हमें उनके अकॉर्डिंगली साइकोलॉजिकली भी हम खेल सकते हैं. Superb. दिख रहा है, सुन रहे हैं वो लोग, बात सुन रहे हैं. Are they younger people? Are they listening to you full throttle? Would they expect your job role in Toyota to be aggressive? Or like for example an HR role, पता होना चाहिए कि JD HR का है तो GD के अंदर आप aggressive नहीं हो सकते. You should be very polite. As my friend said, taking on my point of my friends. There is एक मेरी बहुत अच्छी line है which I always tell you guys can use it in any GD, which is like there is no black or white. There are always shades of grey. Yes. You know, there are always shades of grey. Or you can use a basic one like two sides of the same coin, etc., etc. वो थोड़ा पुराना हो चुका है. वो So सारा just like लंबा करना चाहिए, जितना तुम एलॉबरेट कर सको उतना अच्छा That's what really helpful. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़ा सा ऑर्डिनरी नहीं रहना है. थोड़ा different है I think. तभी तो लोग नजर में रखेंगे, वरना बहुत क्या ही बढ़िया. फायदा है. हम भी सेम है, आप भी सेम है. क्या बात है, क्या बात है. बढ़िया. Great. So you've cracked the interview for this. शादी का भी इंटरव्यू तैयारी तेरी पूरी लग शादी रही में है. तो हुआ था. इन-लॉज का हुआ, फिर पर्सनल इंटरव्यू हुआ. That's so sweet. That's so sweet. All the best for the coming up placements as well. It's going to be fun. Great. Let's talk about the second part, personal interview. Personal interview is very crucial. Normally, GDs are eliminators. If they don't like you, they're going to say, okay, get out, right? right. Or sometimes the GD points get added to your personal interview points as well. For the college admission process, when you are sitting inside admissions, many a times GD plus PI both happens together. It's not an eliminator. But when a company comes on campus, HUL, P&G or Toyota, I got to know EY, Deloitte are also coming on campus for your Yes. hiring, like PwCs of the world. When they come on campus at Acharya or any other business school, they always say कि यार अपने को elimination करना है because जल्दी रैप अप करके एक या दो लोग लेने हैं और बाकी लोग रिजेक्ट करने हैं, right? So let's go into deep dive into personal interview. What kind of questions were asked to you when you were giving your interview at the business school? मतलब व्हाट आर यू रियली गुड एट. What are you really good at? हाँ, और वही SWOT एनालिसिस, बेसिकली स्ट्रेंथ वीकनेस, उससे तुम अपॉर्चुनिटी कैसे सीख करोगे. एंड बस यही मेन पूरा सेंटर आइडिया तो यही था. Okay, that's great. Kuheli. That's the name? या करेक्ट. सरकार. सरकार. मेरा इंटरव्यू में बेसिकली पूछा था कि मेरा डिग्री किस में था, तो आई सेड इट्स BBA. पूछा था कोई स्पेशलाइजेशन में था कि नहीं, तो मैंने बोला था मेरा मार्केटिंग ही था.
तो सडनली वो क्वेश्चन ही मार्केटिंग के ऊपर हो गया कि मेरे को एक ग्लास दिया जाएगा या बॉटल दिया जाएगा, उसमें पानी के सिवाय आप उसको कैसे मार्केटिंग कर सकोगे, लाइक हाउ कैन यू डू एंड दैट, दे जस्ट वांटेड टू नो। मार्केटिंग मतलब बॉटल में तो सिर्फ पानी रखने का ही काम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसका और क्या यूजेस है। अच्छा, what were the other uses of this water bottle? bottle, Okay, yeah. तो What मैं- did you say like? मैंने इट वाज लाइक सडनली मैंने बोला यार, आई सेड ओके फाइन, 1-2 मिनट मुझे टाइम तो दीजिए एटलीस्ट टू प्रिपेयर। शी सेड या फाइन, टेक योर टाइम। मैंने फिर बोला एज अ पेपर स्टैंड, लाइक फ्लावर वास। शी सेड या फाइन। फिर पानी भर के मारने के लिए। हाँ, मैंने पूछा कि कैन एग्रेसिव थिंग्स कैन आल्सो बी यूजफुल, तो हाँ कुछ भी। मैंने बोला हाँ, फिर तो मार पीट कुछ भी कर लो उससे, यूजफुल तो ओके, गुड, ठीक है, बढ़िया। फिर दूसरा क्वेश्चंस रिगार्डिंग मेरा बैकग्राउंड ही था, मतलब एक्सपीरियंस था कि नहीं था। तो मैंने बोला था मेरा मार्केटिंग में एक्सपीरियंस था। 3 महीने एक्सपीरियंस है, ऐसे फर्जी मार्केटिंग में एक्सपीरियंस था। तो Only 3 3 months। महीने में भी मैंने सीखा तो है। क्या किया आपने? क्या internship सेल्स एंड मार्केटिंग में ही था। वो न्यू स्टार्टअप था इकोबूम बोल के, उसका इन हाउस प्रोडक्ट था यूजीसी कार्ड, एंड गूगल स्ट्रीट व्यू करता था वो लोग डिफरेंट कंपनीज का, लाइक स्कूल्स, बिजनेस, एनीथिंग। तो हम लोग वो जाते थे कंपनीज के स्टोर्स या कंपनीज कहीं पे भी हो, एंड वी यूज्ड टू डू द गूगल स्ट्रीट व्यू, जो गूगल में उन लोग का गूगल पेज में आता था, एंड वी यूज्ड टू लॉन्च दैट यूजीसी कार्ड, एनएफसी टैप कार्ड। तो उसमें भी वेरियस कैटेगरीज रहता था। फ्री था क्या? उनके लिए पैसे लगते थे? किसके लिए? नहीं, पैसा था। पैसा था, अच्छा। वैसे ही मैंने कहा कुछ होता है ना। गुड यार, गुड। ओके, सो हाँ, how the Toyota interview? You got experience, like 2 years experience, right? Yes. Okay, great. Toyota internship was 3 months. Yeah, Before that was during your college के साथ first year में. Yeah, after my Okay. grad, I have experience. After that, I joined here. Understood. These schools, and Understood. where I went into internship in Toyota. Like in Toyota, I didn't have any personal interview, but they got into. There was no PI. No, it was not there. They just saw my profile because I had experience. First love, लड़का Yeah. profile, resume अच्छा है भाई. Profile देखा and they got to know that I'm. What the hell did you have your resume? They didn't take your interview. उसका बेचारी का interview लिया इतना लंबा चौड़ा. Toyota is basically manufacturing industry and I'm mechanical engineer, so. That's it. Yeah. Wow. Which means resume fitment is also very important. There could be Right. many companies, good companies like Toyota, they'll just see your resume and say, okay, this guy could be good, and it's all relative, right? सुहास पसंद नहीं आया अपने को, सुहास पसंद आया, सरकार पसंद नहीं आई तो सुहास को ले जाएंगे बिना शक्ल देखे। बहुत कम होता है ऐसा, बहुत कम होता है, पर ऐसा भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। Being honest, शक्ल वगल सब बाद में, तुम जितने मर्जी स्मार्ट दिखते हो, क्यूट दिखते हो, it doesn't matter at all. The first thing is your resume. Build your resume nicely, right? Right. Did they have any workshops how to build resumes? Yes, कुछ absolutely. करते Yeah. हैं? We had pre-placement trainings where we वो understood करते how हैं। to learn for aptitude, how to prepare resumes. बहुत बढ़िया। So based on that, it was my luck getting to Toyota without the interview. That's lovely. PPO तो उसका है, तेरा PPO नहीं है। ज़्यादा खुश मत हो, लाख। Actually, before the interview that started with personal interview, we went through amplitude test, Achha. where even that was a factor where I could get into the next stage of Yeah, most of these kids are going to do this little later on because they've just didn't catch. They're listening to this interview because they want to crack their group discussion for the business school. I had PGCT, once I had written PGCT. So that made me a bit easy for me to crack the amplitude first round. So I was eligible for the second round. And second round, the personal interviews was based on my resume, what it was. Because I'm from BSc background and now I'm into the management studies. So even they asked, why from BSc to management? It was my passion. The answering skill also matter when you just get into the interview. ये बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है. Feel like going on again and again, but in paucity of time. Any parting thoughts to all these people who are listening to you guys यार? कई लोग ये सुन के आए अहमदाबाद जाने वाले, कई लोग आए बैंगलोर के, SPG बॉम्बे, माई स्कूल कहीं यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तुम्हारे साथ MBS के अंदर. Any parting thoughts to all these 20-21-year-old तुम्हारे जैसे बच्चे जो उधर बैठे हैं कैमरे के? कुछ नहीं, काम रहो, सब कुछ सही हो जाएगा, दिमाग लगाओ, ऐसे ही कुछ भी पैनिक करके मत बोल देना, दिमाग लगाना बस। मैं तो बोलूंगी जैसे मैं थी, बिना प्रिपरेशन था, पर मेरे को नहीं पता था क्या आने वाला है, तो मुझे जो टॉपिक मिला था उसमें भी मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। मैं सबका सुनी, मेरा दिमाग लगाई, जब टाइम लगा बोलना है मैंने बोल दिया, बस हो गया काम बहुत खत्म। बढ़िया, पर इससे थोड़ी ज्यादा प्रिपरेशन करके जाना। गुड। हाँ जी। What I want to say is when you get an opportunity, just prepare, just see the JD, and before you apply, if it is relevant to your domain or what you want to get into, Yeah. so just study the JD completely and make
the things, understand what the company wants and what you are good at, and talk relevant things in group discussion, which you know from the job description which they have given. Excellent. I say I never prepared for interview, even though it was my first interview. I never prepared, but I gain knowledge from people how the interviews goes on. So I just took that and went. Aram se I told. I was so calm. Even the interview was good with me. So that went all, and yeah, I got my job. That's lovely. That's lovely. All right, boys and girls, वो क्या बोलते हैं? Like, share. Like करो, subscribe करो. Thank you so much for this. All right, boys and girls. Do the like button. मुझे comment करके बताइए भाई. How is your interview experience going on? कैसे तुमने कौन से college का interview experience दिया है? Fresher हो के work experience हो? And anybody is given interview at ABBS, मुझे पक्का comment करके बताइएगा कि आपका ABBS का interview कब हुआ, कैसे हुआ, and how was your experience as well. Would you guys be able to help all these people if they have any questions regarding their Sure, interview preparation? definitely. All right, boys and girls, thank you so much for joining in. Take care. See you in the comment section. Bye bye.